Very sorry, I didn't do the recording at all. Nobody made me do the reminder. So students, these are all the formulas for gravitational acceleration. Is that clear? This is the respective position. This is at the depth. This is graphical representation of gravitational acceleration with respect to position, students, and this is the mathematical formula. Okay. Okay, so please pay attention to this. Consider the Earth, okay, and take a point anywhere onto the Earth's surface, students. What are we trying to go for, students? We are trying to go for gravitational acceleration at a certain latitude, students. Okay, now we are trying to go for the derivation for gravitational acceleration at a certain latitude. G lambda is being G minus R omega square, students, cos per lambda. What does omega of this means? Omega of the Earth. Can anybody tell me what's the value of omega of Earth, students? Angular velocity of Earth. Yes, anybody? P/R. Yeah, it's 7.26 into 10 to the power of minus 5 radian second. और ये मैं बता चुका students, omega is actually 2 pi by 2. Students, angular velocity of the Earth is the velocity with which the Earth rotates about its own axis. So distance upon time we consider 2 pi r by t we consider, that is the theta by r. So theta by t we consider angular displacement upon time. Students, ये जो 2 pi है, that is how much? It's 6.28. Time taken for one rotation, students, it's 86,400 seconds. So your answer is radian per second. This is what your answer is. Hope this part is clear to all the students. Students, this is the angular velocity with the Earth rotating about its own axis. We are trying to derive gravitational acceleration somewhere at point P, students. Now, please pay attention. The Earth is rotating about its axis. Students, what exactly latitude means? Anybody can tell me what exactly latitude means? Students, can you tell me what exactly mean by the term latitude? Anyone? Students? Students, latitude is actually a plane parallel to the equatorial plane. Students, any plane parallel to the equatorial plane is called at a certain latitude. Yeah, second way of saying it. The line joining any place on the Earth's surface, okay, to the equator we consider at the center is called the certain latitude. So this is actually the angle formed by the radius and the equatorial plane. Students, this is called at a certain latitude. This is also at a certain latitude. ये alternate angles हो जाएंगे. Lambda is actually at a certain latitude, degrees we consider.
क्या इतना डायग्राम क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Everyone, please. Then only I can proceed further ahead. Yes, sir. Okay, अभी ध्यान से सुना स्टूडेंट्स. अर्थ करता है रोटेशनल मोशन. प्लीज एवरीबॉडी बी विद मी फॉर अनदर 4 to 5 minutes. Derivation will be over. Students, अर्थ इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन. तो मुझे ये बताओ, ये जो पॉइंट पी है वो कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? अगर अर्थ करता है रोटेशनल मोशन, तो पॉइंट पी ऑन द अर्थ सरफेस कौन सा मोशन करेगा? यू विल से सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना? Yes, sir. और इसका भी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? उतना ही होगा जो अर्थ का है. हेलो, 7.26 into 10⁻⁵ यही होगा. अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर सपोज इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूँ स्टूडेंट्स, अभी ध्यान से देखना. ये देखो, ये डायग्राम, ये है मेरा पॉइंट पी, ये है तुम्हारा लाइन गोइंग फ्रॉम पॉइंट पी टुवर्ड्स द सेंटर. स्टूडेंट्स, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स. ओके, ये तुम्हारा रेडियस हुआ. एग्रीड? ये जो पी है वो परफॉर्म क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स. ये इसका सर्कुलर पाथ मैंने बता दिया. देखो, ये इसका सर्कुलर पाथ है ना स्टूडेंट्स? तो ये हुआ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. ये लैम्बडा, तो ये भी लैम्बडा आ गया. स्टूडेंट्स, ये डायग्राम एग्जैक्टली सेम है. सिर्फ मैंने किया क्या है, इसको मैग्नीफाई कर दिया बस. स्टूडेंट्स, इसी डायग्राम को मैंने मैग्नीफाई कर दिया. अगर मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर ये पॉइंट पी है तो इसके ऊपर कौन से फोर्सेस होंगे? तो तुरंत तुम बोलोगे सर, पॉइंट पी यूसीएम कर रहा है, उसको एक फोर्स बाहर की तरफ तो लगेगा. वो कौन सा फोर्स है? फोर्स सेंट्रीफ्यूगल. ये कौन सा है सर? ये है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, मुझे ये बता स्टूडेंट्स, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां से कहां डायरेक्ट होता है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डायरेक्ट फ्रॉम पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये तुम्हारा mg होगा. इज इट एट द एक्चुअल वेट वी कंसीडर? यस. लेकिन क्या ये वेट के ऊपर दूसरा कोई फोर्स एक्ट हो रहा है? तो बोलेंगे हाँ सर, दूसरा फोर्स एक्ट हो रहा है ना. कौन सा? कौन सा? सर, हम ये फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. स्टूडेंट्स, वेक्टर्स चैप्टर्स में गया मैं. ये जो फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल है, उसके दो फोर्स होंगे. एक फोर्स इस तरफ जाएगा, दूसरा फोर्स परपेंडिकुलर आएगा. स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी बी विथ मी, ध्यान से सुनना. दिस फोर्स सेंट्रीफ्यूगल is resolved into two forces, two orthogonal forces mutually perpendicular to each other. अगर ये लैम्बडा है तो स्टूडेंट्स कहने से ये एंगल भी लैम्बडा होगा. तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? अरे सर, ये लैम्बडा है तो ये होगा एफ फोर्स सेंट्रीफ्यूगल कॉस लैम्बडा. ये होगा साइन लैम्बडा. साइन लैम्बडा की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, हमारा 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 पॉइंट कौन सा है? हमारा पॉइंट पी है. इसके ऊपर कितने फोर्स एक्ट हो रहा है? सर, ये तो एक्चुअल ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट हो रहा है जो mg है. लेकिन पीछे की तरफ कौन सा जा रहा है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स सेंट्रीफ्यूगल. यानी पॉइंट पी के ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रहा है. स्टूडेंट्स, देयर इज अ स्ट्रगल. हेलो स्टूडेंट्स, देयर इज अ स्ट्रगल. मारामारी हो रहा है दो फोर्सेस के बीच में. वो बोलता है, ये बोलता है कि मैं ग्रेटर हूं, वो वाला बोलता है वो ग्रेटर है. अगर सपोज ये ग्रेटर होता, हेलो स्टूडेंट्स, कंपोनेंट वाला ग्रेटर होता, तो भाई ये तो चला जाता ना, ये तो इस तरफ चला जाता. यानी बोथ द फोर्सेस आर स्लाइटली बैलेंसिंग ईच अदर. लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स, ये फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट बाउंड है टू द अर्थ. ऑब्जेक्ट इज बाउंड टू द अर्थ. यानी स्टूडेंट्स, द apparent weight, ध्यान से स्टूडेंट्स, the apparent weight at point P is equal to the actual weight of the body at point P minus component of force of centrifugal. आ गया तुम्हारा फोर्सेस के बारे में? एक इक्वेशन हो गया ना. ये फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है, ये फोर्स इस तरफ जा रहा है. थोड़ा सा रिजल्टेंट फोर्स, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो, वो तुम्हारा अपरेंट वेट हो जाएगा. एक्चुअल वेट इज दिस इज द अपरेंट वेट. Students, this is the apparent weight at P. What is this point P? What is this point P? So point P is at a certain latitude. Lambda दिया हुआ है. What is latitude? What is latitude? Any plane parallel to the equatorial plane is called as a latitude. Or the angle formed by the radius with the equator.
at the center is called at a certain latitude. ये lambda तो ये भी lambda, ये lambda तो सामने वाला भी lambda, vertically opposite angles, ये alternate angles हुए. Students, क्या ये equation सबको clear हुआ forces के बारे में? हाँ students, तो मैं आगे बढ़ूं. Apparent weight due to apparent weight at point P due to a particular position at latitude is equal to actual weight minus component of the force of centrifugal. What is the apparent weight? It's the mass of the body into gravitational acceleration at a certain latitude. ये क्या है? It's the mass of the body into gravitational acceleration at the actual minus what is the formula for force centrifugal? Students, the formula for force centrifugal is what? Force centrifugal is given by the formula M R omega square component cos lambda. What is small r? What is small r? Sir, if you happen to look at this right angle triangle, everybody please concentrate. ये तुम्हारा right angle triangle है, ये small r है, ये capital R है, ये lambda था. Friends, what is cos r? Sorry, what is cos lambda? What is cos lambda? Adjacent upon hypotenuse. Friends, cos lambda is equal to adjacent upon hypotenuse. So can I use this formula now over here? Component, okay? Component of force, ये वाला. तो देखो कंपोनेंट ऑफ फोर्स में क्या लिखूंगा मैं, ध्यान से देखना. M R omega square and cos lambda. But what is small r? Students, what is small r? What is small r? Capital R into cos. So now can I say M G lambda is equal to mg minus m instead of small r. What am I writing it? What am I writing it? R omega square cos lambda into cos lambda will be what? Can I say, students, this becomes a formula for apparent weight. Apparent weight at a certain latitude is equal to actual weight minus the component of force of centrifugal. Why didn't I take small r? मेरा expression मैंने small r में नहीं दिया है, क्योंकि small r हमें मालूम ही नहीं है ना. Students, ये at a certain latitude है, ये distance तुम्हें थोड़ी पता है. ये distance नहीं पता, तुम्हें capital तो पता है ना, radius of the earth 6,400 kilometer. So try to get your mathematical relation in terms of capital R, never to keep it in small r. And how do I get it? अरे lambda मालूम है, latitude तो वो देंगे problems में students. They will say a body is at a certain latitude, certain degrees. Now this formula is based on to weight. Can I divide both the sides by mass? Can I divide both the sides by mass? What am I going to get it? Acceleration due to gravity at a certain latitude is acceleration due to gravity on the Earth's surface minus r omega square cos square lambda. Is this your formula for gravitational acceleration at a certain latitude? क्या ये derivation clear हुआ सबको? हाँ students? Yes, sir. Please, only one student is replying. What about the rest of them, students? Akshata, Aditi, what about y'all? Ayush, Gauri, Kirti, what about you, Kirti? Getting it? Yes, sir. Yes, sir. Please, any kind of a discrepancy, do ask. See one thing, students, your schools have thrown this chapter onto your students. लेकिन जब भी तुम physics के कुछ भी chapters करते हो ना, students, it's not your fault, my dear. It's not your fault. Students, आगे के chapters strong होने जरूरी है. Vectors पूरा strong हो, क्योंकि vectors आता है यहाँ पे कितना मेरा, अभी forces को पढ़ा, laws of motion के उससे unbalanced forces आया, एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक है इसके component मैंने ले लिए, ये f cos theta, ये f sin theta. f sin theta तो मुझे लेना नहीं है, मुझे f cos theta इसके डायरेक्शन में, लेकिन ये इसके डायरेक्शन में नहीं है, ऑपोजिट में हो गया. यानी एक स्ट्रगल चल रहा है दोनों फोर्सेस के बीच में, एक है कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल और एक एक्चुअल वेट. उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी को एक अपरेंट वेट होगा. तो अपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होगा? अपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होगा? सर एक्चुअल में से इसको सबट्रैक्ट करो. अभी तुम बोलोगे सर एक्चुअल को आपने आगे क्यों लिखा, इसको पीछे क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट इज होल्ड टू द अर्थ ना, और वो होल्ड किसकी वजह से है? इट्स बिकॉज़ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. तो इसका मैं स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज्यादा रखूंगा मैं as compared to the component of force of centrifugal. Component of force of centrifugal क्या हो जाएगा?
एफ कॉस लैम्बडा, उसका फॉर्मूला क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्बडा। आर, स्मॉल आर तो मुझे पता नहीं है, तो स्मॉल आर को मुझे कैपिटल आर में डालना पड़ा। कैसे रखोगे सर, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये भी राइट एंगल, व्हाट इज कॉस ऑफ लैम्बडा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैंने स्मॉल आर को आर में डाल दिया, ये मेरा आंसर हो गया। अभी इसी इसी के साथ में खेलना शुरू करो। अगर सपोज, ध्यान से देखना, सपोज अगर मैंने पॉइंट पी को इक्वेटर पे ले लिया, चलो इसको हम यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट्स, इफ आई टेक पॉइंट पी एट इक्वेटर, चलो पॉइंट पी एट इक्वेटर, तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स व्हाट इज द लैटिट्यूड, लैम्बडा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स बताओ, टेल मी लैम्बडा क्या बन जाएगा, 0. जीरो, डाल दो जीरो। इफ लैम्बडा इज जीरो स्टूडेंट्स, व्हाट इज कॉस ऑफ जीरो, 1. cos of 0 1, so can I say g at equator is g minus r omega square, यानी स्टूडेंट्स व्हाट्स द वैल्यू ऑफ g at equator, g minus r omega square, ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा g at equator। अगर सपोज मैंने पोल्स पे ले लिया स्टूडेंट्स, एट पोल्स, चलो एट पोल्स लेता हूँ स्टूडेंट्स, यही पॉइंट पी को, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यही पॉइंट पी को मैं पोल्स की तरफ लेता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं पोल्स पे लेता हूँ तो ये लैम्बडा क्या बन जाएगा बताओ मुझे, क्या बन जाएगा, हाँ स्टूडेंट्स, कैन यू से इट बिकम्स 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, देखो ना, इक्वेटर से अगर मैं पोल लेता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली इट बिकम्स 90 डिग्री, पाई बाय 2। स्टूडेंट्स व्हाट इज cos ऑफ 90, व्हाट इज cos ऑफ 90, 0. जीरो, तो देखो g एट पोल्स क्या होगा, g cos of 90 is 0, 0 into this, you can say g at poles is equal to g, यानी ये फैक्टर 0 हो गया। Now a student who's wise and smart, a student who's wise and smart will say, अरे सर आपने प्रूफ कर दिया, आपने प्रूफ कर दिया, जो हम स्कूल लेवल में पढ़ते थे, हम लोग ने ये पढ़ा था कि g at poles is always greater than g at equator, g at poles is always greater than g at equator। अगर मैं ये g को g at poles लिखता हूँ तो देखो मेरा इक्वेशन क्या होगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, g at equator, g के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, g at poles minus r omega square, therefore can I say g at poles minus g at equator is equal to r omega square, so can I say gravitational acceleration at poles is always greater than gravitational acceleration at equator, by what value, by what value, r omega square, what is the value of r, what is the value of r, 6.4 into 10 to 6, what is the value of omega, what is the value of omega, 7.26 into 10 to minus 5, square करो, पूरे को multiply करो, students your answer will be around 0.0035, that's the difference between the two। स्टूडेंट्स यहां से हम कंक्लूड करते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पोल्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इक्वेटर, जो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका था, मैंने बड़ा सा डायग्राम बनाया था, फिर मैंने बोला था जी एट पोल्स, जी एट इक्वेटर, जी एट डेप्थ, जी एट द सेंटर, जी एट ऑल्टीट्यूड, जी एट आउटर स्पेस, तो एट पोल्स एंड एट इक्वेटर देयर वाज अ डिफरेंस इन द वैल्यू, it was more at poles, it was less at equator। शायद मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था, if you are a goldsmith, कहाँ पे गोल्ड खरीदोगे, कहाँ पे बेचोगे, पूछा था कि नहीं पूछा था, हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. तो ये तुम्हारा आ गया। तो ये चीजें कहाँ से, ये चीजें कहाँ से आती है, ये यही डेरिवेशन से आ रही है स्टूडेंट्स। So when a student understands properly, you can compare, oh this is what it is। अभी दूसरा और एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये क्यों दे रहा हूँ मैं, पता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अभी सपोज ध्यान से सुना, सपोज अगर मैंने अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा दी, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, नाउ सपोज इफ आई से द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस 17 टाइम्स द प्रेजेंट वैल्यू। स्टूडेंट्स अर्थ अभी घूम रहा है, अर्थ रोटेट हो रहा है, क्या हमें फील हो रहा है अभी, फीलिंग, नो यू आर नॉट फीलिंग एट ऑल, व्हाई, 10⁻⁵, छोटी सी वैल्यू है। अगर सपोज बाय चांस अर्थ 17 गुना मूव करना शुरू करेगा, तो उसको कैसे समझना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, उसको ऐसे समझना है कि एक मेरी गो राउंड है, और मेरी गो राउंड पे तुम लोग सारे सर्कमफेरेंस पे हो, है ना, और फिर वो मेरी गो राउंड एकदम धीरे से मूव हो रहा है, फील ही नहीं होगा स्टूडेंट्स, में कुछ फील ही नहीं होगा, 10⁻⁵।
लेकिन अगर मैंने मेरी को राउंड को फास्ट घुमाना शुरू कर दिया, what is going to happen on for the people who are standing at the periphery? Can I say they will get a radially outward force? है ना, उनको कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? there will be centrifugal force acting in this direction and the body will be thrown away. यानी स्टूडेंट्स ये भी पूछा जाता है, when does the objects will be thrown away from the earth's surface? When the angular velocity exceeds 17 times the present value. इसका इफेक्ट तुम्हें कहां पे ज्यादा फील होगा? इक्वेटर पे, क्योंकि ये रेडियस ग्रेटर है। यहां से ऑब्जेक्ट्स जितने भी प्लेसेस हो सारे उड़ के चले जाएंगे, but those who are at the poles, they will be holding themselves at the poles. Is this clear to all questions? Can I erase this now? Yes, sir. Okay, fine. Students, why am I stressing on this? This was the toughest part. Gravitational acceleration का सबसे toughest होता है। अभी पूरा part अभी तुम्हारा बाकी है, तुम्हारा क्या है? Kepler's law and energy, and that is very easy. That is the easiest part. अगर ये part clear हो गया तो that part becomes very easy for students to recollect and remember. Okay, students, now we go for Kepler's law, students. Okay, John Kepler was the one who put forward the three planetary law, students. Okay, so that's called as Kepler's law. The first law speaks about, students. Okay, the first law speaks about we consider is your orbital law. We consider Kepler's first law we consider is your orbital law. We consider where it says, the answer is no, where it says that all planets, since all planets revolve around the sun. All planets revolve around the sun, where considering sun as one of its foci, and the path of these planets revolving around the sun is elliptical. But motion is periodic. Path elliptical है, students. Elliptical path. Motion periodic. So all planet, students, revolve around the sun in an elliptical path. Motion periodic. One can also say they are performing uniform circular motion. लेकिन circular path है ही नहीं, path तो elliptical है. Where sun is considered to be as one of its foci. ये इसको focus पकड़ के चलता है. Now, when you look at this diagram, students, see over here, if I see for an elliptical path, students, what is this distance we consider? Students, this is called as a major axis. I call this as major axis. A perpendicular to this, I'll call as the minor axis, students. Now, suppose if a planet is far away from the sun, okay, then this position, I'll call it as apogee or aphelion. If the planet is somewhere over here, it's closer by, students. So that exactly I'll consider as what? Perigee. Perihelion. See, how do students remember, students? Apogee and perigee कैसे याद रखना है? P-E-R-I-G-E-E. A-P-O-G-E-E. Students, how do you remember? कैसे याद करोगे? तो तुम्हें सीधा हिसाब है, students. अगर planet दूर है, दूर का मतलब away. दूर का मतलब away. A for away, A for apogee. पास में, P for pass, पास में perigee. So these are the 2 points we consider under the major axis. One is far away and one is closer, we consider. So does the planet revolve around? Yes, the planet revolves around the sun in an elliptical path. Motion is always periodic, we consider. And sun is considered to be as the focus, we consider. The mean distance between the planet and the sun, we consider as small r, we consider. That's small r, that's the mean distance we consider. For a mean distance, I can consider this as your semi-major axis, students. यानी सपोज अगर ये डिस्टेंस में a लेता हूं, स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये सन है,
ये है पेरिगी, ये है एपोगी। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ए लेता हूँ, ये बी लेता हूँ, तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज स्मॉल आर। ये जो स्मॉल आर है ना स्टूडेंट्स, ये है सेमी मेजर एक्सिस। क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? दिस इज अ सन, this is a planet which is closer, at a closer distance. That's what we call as perigee. The planets that are far away, that is at apogee. The corresponding distance has a variation. A and B are the two distances. If I go for the average of it, what exactly I'll call that? Semi-major axis, जिसको मैंने R denote करके रखा हूँ। क्या ये clear हुआ सबको? Yes, sir. Now let us move further ahead. So what exactly Kepler's first law states? Since when you refer to Kepler's first law states that all planets, all planets revolve around the sun. All planets revolve around the sun, performing uniform circular motion, where we consider the motion is periodic. Path elliptical we consider. Agreed? Now, if I happen to go for the second law, we consider. What exactly second law? Second law we consider is that the planet which is revolving around the sun, this is the sun. This is the elliptical path I'll consider. Now, students, listen carefully. This is the position vector. You must have learned it in vector students. Position vector speaks about the instantaneous position of the particle. The position vector of a given planet shows the position of the planet. Second law states that the position vector, students, traces equal area in an equal interval of time. Students, the position vector traces equal area in an equal interval of time, students. That means what exactly your aerial velocity over here? The aerial velocity, that means dA by dt, students. Aerial, area upon time, aerial velocity, students, unit kya hoga? Meter square second inverse. That's a unit that all the time remains constant. That means the planet traces equal area in an equal interval of time. Equal area in an equal interval of time. And what exactly its formula? Its formula is L by 2m, students. What exactly L over here stands for? L stands for angular momentum. Students, angular momentum of the planet. And what exactly can we consider? Mass of planet. The students, second law speaks about what? Second law speaks about the position vector. The position vector traces equal area in an equal interval of time. That means the aerial velocity of a revolving planet around the sun all the time remains constant. If somebody asks you what's the formula for aerial velocity, students, the answer is L by 2m. What does L over here stands for? Angular momentum of the planet. M stands for mass of the planet. And that is what we call the second law we consider. Is this part clear with all of you? Students, is this clear? Second one. So can you explain what is aerial Yes, velocity? sir. My dear, area velocity, that means it traces equal. Now, how is the motion? Dansa sunna. Motion of the planet. Dansa sunna. The time, everybody please be with me. The time when the planet is going away from the sun. Suppose the planet का position यहाँ पे. Students, मुझे ये बताओ, is the distance more or less? More. Gravitational force will decrease. If I consider over here, what about the distance? Is the distance less? Yes, gravitational force will increase. Means what is happening, Students, how can you say that the motion is periodic? Whenever a planet revolves around the sun, students, its path is elliptical, but when it's going away from the sun, its velocity will decrease. जैसे वो नजदीक आता है, increase, decrease. Look at my finger. See the motion of my finger. It moves this part very fast. So the time taken to move with respect to the part close
closer is so fast and the time taken away is so more that the average time for one complete revolution remains constant. And that's what they say, areal velocity dA by dt. That means this position vector, students, it traces equal area in an equal interval of time. This is d theta, it is ds. This is length of r, and this is theta. It traces equal area in an equal interval of time. And the formula for area velocity is L by 2m, which all the time remains constant. And mind you, one can easily derive this formula also. लेकिन थोड़ा सा रोटेशनल का कंसेप्ट आना जरूरी। अगर तुम चाहो तो मैं इसका डेरिवेशन देता हूँ, एक सिंपल टर्म्स में डेरिवेशन। चलो, लेट अस फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर। प्लीज एवरीबॉडी, सोचो कि ये पार्ट का एरिया चाहिए। ये सोचो कि ये पॉइंट बहुत ही नजदीक है स्टूडेंट्स। These two points are very close to each other. Students, मैं यहाँ से perpendicular ड्रॉप कर दूँ। Everybody be with me. ये perpendicular ड्रॉप करती है। Can you tell me students what is the area of this geometrical shape? तो मैंने कहा सर एरिया, आपने बोला कि ये बहुत ही छोटा एरिया है, तो एरिया हम छोटा लेते हैं सर। एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू सर बेस, तो आपने बोला था आर्क होगा लेंथ ऑफ आर्क, है ना, हाफ इनटू बेस। हाइट क्या होगा सर? हाइट तो आपका पोजीशन वेक्टर ही आ रहा है। क्या इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, students, area of this particular shaded portion is equal to what? Half into base into r. It's a triangle. If I take this point P and this point very close, what about this length of the arc? And this will be simply equal to a length of a segment, a very small length. Students, itna clear hua ye part? Students? So area is equal to what? Half into, differentiate both the sides with respect to time. Ho gaya. What is displacement upon time? Velocity. Multiply numerator by m, denominator by m. Students, what is MVR? Angular momentum. This will you learn it in rotation dynamics, students. So what exactly? Your dA by dt is equal to L by 2. And that all the time remains constant. Is this clear, students? Yes, sir. Okay. The last law, please, the last one. The third one is called as a harmonic law or the periodic law. Students, what exactly the harmonic law or periodic law states? It says that the square of the time period of a planet revolving around the sun is directly proportional to cube of the semi-major axis. Cube of the semi-major axis. That means a plus b divided by 2 ka cube. That is R cube. Yani students, your third law is called as harmonic law or periodic law or law of periods, which states that square of the time period of revolution is directly proportional to the cube of the semi-major axis. This is the major axis, students. This is called as the semi-major axis, distance of the planet from the sun. T square is proportional to R cube. And that is what your harmonic. So how many laws are there for Kepler's? 3 laws we consider. The first one we speak about is law of orbits. Second one we speak about law of area. Third law is called as law of period. Is this part clear to all of you all? If somebody asks you what's the formula for aerial velocity? Angular momentum upon twice the mass. What is the formula of angular momentum? MVR. Mass, velocity, position vector. What is the unit of aerial velocity? Area upon time. Area upon time. Meter square upon second. Is this clear, students? Can I erase this part? Yes, sir. Okay. Now, once when you get this part, students, we can go for your orbital velocity, students, and then finally your energy at the end of the chapter.
Okay, so listen carefully. Now, suppose if I say you are trying to launch a particular satellite, students, okay, from the Earth surface. Friends, ये ध्यान में रखना कि कभी भी तुम Earth surface से अगर किसी को launch करते हो from the Earth surface, students, this is a radius. Suppose if a rocket has been launched, students, तो ये ध्यान में रखना students, सैटेलाइट को लॉन्च करना है यानी रॉकेट को लॉन्च करना है, तो ये क्या मालूम है, ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है स्टूडेंट्स, मल्टी स्टेज. लेकिन जनरली इन योर स्कोप ऑफ स्टडीज इट गेट्स 2 स्टेज रॉकेट्स. यानी कोई भी रॉकेट को तुम्हें लॉन्च करना है एट अ सर्टेन हाइट अबव द अर्थ सरफेस, देन देयर आर 2 फायरिंग्स डन. 2 फायरिंग्स. द फर्स्ट फायरिंग इज डन फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ये फायरिंग क्या करता है मालूम है, ये फायरिंग रॉकेट को एक डिजायर्ड हाइट पे लेके जाता है अबव द अर्थ सरफेस, a desired height, which is around 35,940 kilometers, which I take it nearly equal to 36,000 kilometers. What's the radius of the Earth? 6,400 kilometers. What's the total distance? R plus H. What is the total distance I'll consider will be? 42,400 kilometers. और ये कौन सा ऑर्बिट है? This orbit is called geosynchronized orbit. Students, launching of satellites is always in the geosynchronized orbits. Students, every nation, ध्यान से सुनना, every nation अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, और वो लॉन्च करते हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, दैट्स अ जियोसिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट. क्या हाइट पे है फ्रॉम द सेंटर? सेंटर से कितनी दूरी पे होगा? अप्रोक्सीमेशन 42,000 किलोमीटर्स. स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना, इंडिया नाउ अंडर द गवर्नेंस ऑफ मोदी, okay, our PM Modi has made a business out of it, of launching of satellites. Different nations के भी सैटेलाइट हम इंडिया से लॉन्च कर रहे हैं, हमारी सैटेलाइट्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं. ये सैटेलाइट्स का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सैटेलाइट्स वी कंसीडर इज to give you wide information throughout, we consider, of different places also, as well as over the India we consider, whether it's for spying, for security purpose, or with respect to weather forecast we consider, or any kind of calamities के हिसाब से, या how exactly celestial bodies का changes है, everything you can get it with respect to these particular satellites. So अगर suppose if I happen to consider student, the sticker is India, the sticker part is India students. तो ये जो रेड कलर का जो कैप है स्टूडेंट्स, ये एक सैटेलाइट है. ये सैटेलाइट स्टूडेंट्स हमेशा ये स्टिकर के सामने ही रहेगा. सोचो कि ये इंडिया है, तो इंडिया का सैटेलाइट ये है. स्टूडेंट्स, जब भी अर्थ रोटेट करता है, स्टूडेंट्स अर्थ रोटेट करता है, व्हाट इज द रोटेशन? 7.26 into 10⁵ है ना. तो स्टूडेंट्स, ये जो सैटेलाइट है वो भी रोटेट करेगा, वो रिवॉल्व करेगा, हमेशा इंडिया के सामने रहेगा. स्टूडेंट्स, हमेशा इंडिया के सामने ही रहेगा वो सैटेलाइट, यानी हमेशा तुम्हें इंफॉर्मेशन देता रहेगा. सो दे हैव टू बी लॉन्च इन द प्रॉपर ऑर्बिट. तो ये जो लॉन्चिंग होता है वो कितने रॉकेट्स में कितनी फायरिंग्स होती है? 2. एक्चुअली मल्टी स्टेज होता है, लेकिन तो सबसे पहला फायरिंग होता है अर्थ सरफेस, उसको एक डिजायर्ड हाइट ले पे आए. जैसे डिजायर्ड हाइट पे लेके आए, फिर उसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलती है. तो यहाँ से तो अभी रॉकेट को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दो स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दो. सिंपल एग्जांपल स्टूडेंट्स, सिंपल एग्जांपल, तुम्हें कोई बिल्डिंग पे खड़ा कर दिया स्टूडेंट्स, तुमने बिल्डिंग पे खड़ा कर दिया, और फिर बिल्डिंग के ऊपर तुमने एक स्टोन दिया, और फिर बोला फेंको हॉरिजॉन्टल. यानी स्टूडेंट्स, वो स्टोन की इतनी स्पीड होनी चाहिए कि वापस वो अर्थ पे नहीं आना चाहिए, वैसे ये होना चाहिए. स्टूडेंट्स, ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट शुड बी सच दैट द रॉकेट शुड परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. स्टूडेंट्स, UCM, ये जो रॉकेट है वहां पे जो सैटेलाइट उसको डिटैच होता है, तो ये सैटेलाइट फिर हमेशा UCM परफॉर्म करना जरूरी है. ये UCM परफॉर्म करना जरूरी है, इसका पाथ हो गया. अगर बाई चांस तुमने रॉकेट को एक सही वेलोसिटी नहीं दी, तो होगा क्या?
सर या तो वो अर्थ में गिरेगा, सीधा अर्थ में गिर जाएगा, या स्टूडेंट्स उसका पाथ इलेप्टिकल भी हो सकता है, उसका पाथ इलेप्टिकल भी हो सकता है, उसका पाथ पैराबोलिक भी हो सकता है, उसका पाथ हाइपरबोलिक भी हो सकता है। सी डिफरेंट पाथ्स। यानी मुझे ना ही डांस से सुना, मुझे ना ही सैटेलाइट अर्थ पे गिराना है प्लीज, ना ही मुझे इसका पाथ इलिप्टिकल चाहिए, ना ही मुझे उसको पैराबोलिक चाहिए, ना ही उसको मुझे हाइपरबोलिक चाहिए, मुझे उसका पाथ क्या चाहिए, सर्क्यूलर ही चाहिए। तो सर्कुलर मोशन के लिए उसको एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देने की जरूरत है। उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी और सो कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। V orbital या V critical students. We are trying to get the relation for this. अभी सिंपल एग्जांपल, अगर सपोज मैंने अर्थ लिया स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, सपोज अगर मैंने अर्थ लिया, मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अर्थ अगर मैं लेता हूँ स्टूडेंट्स, मुझे बताओ कितनी सैटेलाइट तुम्हें चाहिए सारे इन्फॉर्मेशन को कवर अप करने के लिए। तो तुम सीधा बोलोगे सर अर्थ लिया ना, अर्थ को स्फीयर लेते हैं, है ना सर, ऐसा करते हैं ना, अर्थ को हम इन सर्कल लेके करते हैं, यानी मैं टैंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, आ गया तुम्हारा इन सर्कल, यानी मुझे एक ट्रायंगल मिला, अर्थ का सेंटर इज अ सेंट्रॉइड। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे एक सैटेलाइट लेता हूँ, यहाँ पे एक सैटेलाइट लेता हूँ और यहाँ पे सैटेलाइट लेता हूँ, तो कितनी सैटेलाइट मुझे सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है अर्थ का। सर ये जो सैटेलाइट है, सर ये जो सैटेलाइट है और ये सर ये पार्ट का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, इसमें से और इसमें से ये पार्ट का इंफॉर्मेशन मिल सकता है, ये और ये में ये पार्ट का इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स इट कैन बी आस्क्ड फॉर एमसीक्यूज, हाउ मेनी सैटेलाइट्स can cover up the entire globe? 3 satellites at 3 vertices of an equilateral triangle, considering the center of the earth as a centriole. समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स समझ में आया? हाँ Yes, sir. स्टूडेंट्स, दूसरी बात Yes, sir. ये जो सैटेलाइट्स का लॉन्चिंग है वो कहाँ पे होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा अर्थ है, ओके, दिस इज इक्वेटर, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इंडिया का भी देखोगे तो इंडिया का ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा। स्टूडेंट्स लॉन्चिंग हमेशा हमारे साउथ से क्यों होता है? क्योंकि सर यहाँ पे तुम्हारा फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन ऑफ फ्यूल बहुत कम होता है टुवर्ड्स द साउथ पार्ट ऑफ इट, तभी तुम्हारे जितने भी तुम्हारे इसरो के स्टेशन है ये सारे साउथ में है। द इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ, वी कंसीडर वहां से लॉन्च होता है। अभी सपोज तुम्हें लॉन्चिंग करना है सैटेलाइट, तो कहाँ पे लॉन्च करते हैं? यू कैन मेक अ सैटेलाइट टू लॉन्च इन इक्वेटोरियल प्लेन। स्टूडेंट्स जो सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन पे लॉन्च होता है ना, वो जियोसिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट है। दैट इज इन व्हिच प्लेन? इक्वेटोरियल। अगर किसी ने पूछा वेयर इज जियोसिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट, व्हाट इज योर आंसर? इक्वेटोरियल प्लेन। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर? नियरली 42,400 किलोमीटर। यानी तुम सैटेलाइट को इक्वेटोरियल प्लेन में भी लॉन्च कर सकते हो। There are certain satellites which can be launched in a polar plane also, students. ये है polar satellite, 1000 kilometers just above the Earth's surface, जो तुम्हें नॉर्थ पोल और साउथ पोल का इंफॉर्मेशन देते हैं। There are certain light satellites which can be launched at a certain latitude. देखो ना latitude आ गया ना, देखो line joining the radius and equator, lambda आ गया। यानी ऐसे 3 satellites, एक पोलर, एक ये और ये इंफॉर्मेशन तुम्हें देते रहते हैं। हर एक नेशन अपना अपना सैटेलाइट, और इनको हम जियोसिंक्रोनाइज, ये इनको हम पार्किंग ऑर्बिट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। जैसे जैसे तुम्हारी सोसाइटी कंपाउंड में कैसे गाड़ियां पार्क होती है ना, किसी और पार्किंग के अंदर तुम जाके लगा नहीं सकते हो, वैसे यहाँ पे भी स्टूडेंट सारे नेशंस को ऑथोरिटी दी हुई है, तुम्हारा ये ऑर्बिट होना चाहिए, ये डिग्री पे होना चाहिए, ये डिस्टेंस पे होना चाहिए, ये लैटिट्यूड पे होना चाहिए। सारे इक्वेटोरियल प्लेन्स में होंगे, लेकिन हर एक का लैटिट्यूड के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, अदरवाइज देयर विल बी कोलिजन। स्पीड के ऊपर भी कंट्रोल होता है, देयर इज अ प्योर कोऑर्डिनेशन। थिंक अबाउट सो मेनी नेशंस, सो मेनी सैटेलाइट्स, देयर इज अ ह्यूज ट्रैफिक जैम आउटर स्पेस में, और ये सारे हमें क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन देता है। जीपीएस, गूगल, यहाँ पे बैठे बैठे यू कैन वॉच द स्ट्रीट्स ऑफ न्यू जर्सी,
तुम्हारा कोई बंदा है जो न्यू जर्सी में चलता होगा तो उसको भी तुम लोकेट कर सकते हो। कैसे? बाय जीपीएस सिस्टम। I don't know exactly how many satellites, but according to me, there's a coordination of 47 to 54 satellites का coordination है वो GPS का। उनका पूरा coordination होता है and then you come to know about it. ये सारा का क्या है? Launching of satellites के हिसाब से। Now students, can you go for the formula for orbital velocity or critical velocity? Why not? कैसे करोगे तुम? Simple. देखो स्टूडेंट्स, जैसे ये सैटेलाइट ऑर्बिट में आएगा तो उसको कौन सा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेंगे? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। So what's the formula for force centripetal on this particular satellite of mass m? See the distance from it. So this is capital R, this is h, ये होगा small r, है ना? What's the formula for force centripetal on this particular satellite? This is satellite, what exactly sir? It's mv square by r. ये v कौन सा है? It is called as critical velocity or orbital velocity. What is the gravitational force between the satellite and the earth? Earth is of mass capital M. G capital M small m upon small r square. Do you have any cancellation? Sir, mass of satellite gets cancelled. Small r will get cancelled. What's the formula for critical velocity or call as orbital velocity, students? Under root gm by small r. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आ गया तुम्हारा फॉर्मूला? हाँ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स कभी भी अगर किसी ने पूछा व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट जी बाय स्मॉल आर। अभी ध्यान से देखना, ये सैटेलाइट है, ध्यान से देखना, इसी ऑर्बिट में ये सैटेलाइट है। There are satellites which are of very small mass. Students, there are satellites which are of 100 grams revolving. There are satellites which are of tons revolving. Independent of mass, कुछ भी होने दो, देखो mass cancel हो गया। ये क्या हुआ हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर सपोज यही सैटेलाइट मैंने बहुत ही नजदीक दे दिया टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, तो क्या करोगे? सर स्मॉल r is equal to r plus h. If I say h is less than r, तो क्या करूंगा? h को निगलेक्ट कर दो। So what's my formula for critical velocity or orbital velocity? Under root gm by capital R. This is nearer to Earth surface. क्या ये clear हुआ students? Students, are you getting it? है ना? Yes, That's very clear. sir. Now suppose अगर किसी ने पूछा what is the time taken for the satellite to complete one revolution? सीधा एकदम straight forward इलाज इसका students. कोई भी स्टूडेंट्स बैठे बैठे इसको सॉल्व करेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या है? हाँ सर सीधा, सर टाइम टेकन फॉर अ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड जो ऑर्बिटल होगी, है ना? सर आ गया 2 पाई r अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है सर? अंडर रूट एट अ सर्टेन हाइट, ये वाला ले तो gm, ओके, ऊपर रूट r चला गया। अभी मैं इसको अंदर ले लेता हूँ रूट में, व्हाट्स माय फॉर्मूला? देयरफॉर t क्या बन जाएगा? डांस लेगा स्टूडेंट्स, 2 पाई को मैं बाहर लेता हूँ, ये r को मैं अंदर लूंगा, फिर से r क्यूब हो जाएगा। Did you get the formula for time period of revolution of a satellite? स्टूडेंट देखो, r को अगर मैं रूट के अंदर लेता हूँ तो r स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज r स्क्वायर इनटू r क्यूब। अभी देखो स्टूडेंट्स, इसको स्क्वायर करो, स्टूडेंट्स इसको स्क्वायर करो। व्हाट इज t स्क्वायर? सर t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 pi square r cube by gm. Students, what is 4 pi square by gm? Constant. Is t square proportional to r cube? आ गया तुम्हारा केप्लर्स थर्ड लॉ, आ गया डेरिवेशन ऑफ केप्लर्स थर्ड लॉ। स्टूडेंट्स, केप्लर्स थर्ड लॉ का डेरिवेशन इसके बाद ही आता है, जब भी तुम्हें ये मिलेगा उसके बाद में ही आएगा। मैंने पहले सिखा दिया था, टेक्स्ट बुक में पहले केप्लर्स दिया है, और वहां पे तुम लोग ने क्या पढ़ा था? स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। देखो ये इसका डेरिवेशन है। Is this clear to all of your students? Is this clear, students? Can I erase this part now?
students, we have got the orbital velocity, we've got the critical velocity, we have the time period of revolution. Okay, we have got the geosynchronized orbit, which is in the equatorial plane. How many satellites can cover up the entire globe? 3 satellites can cover up the entire globe. Launching of a satellite can be in which all planes? It can be in an equatorial plane, it can be in the polar axis also, or it can be at a certain latitude also. If the satellite is revolving very close to the Earth's surface, what's the formula for orbital velocity? 100 gm upon capital R. If it's at a certain height, gm upon small r. What is small r? R plus h. क्या मैं इसको erase करूँ अभी students? Yes, sir. Now the last part. Now the total energy and escape velocity. That's all. Now listen students. Okay. This is what the Earth we consider. Okay. This is the center of the Earth. Mass of Earth is capital M. This is radius, and this is an object of mass small m on the Earth's surface, and this is at rest. Friends, मुझे ये बताओ, अगर कोई भी object at rest on the Earth's surface है, तो can you tell me what exactly the total energy possessed by the body? Friends, हमेशा ध्यान में रखना, total energy of any object on the Earth's surface or any satellite, friends, is always equal to energy kinetic plus energy potential, which is actually we consider energy total is U plus K. Which is this potential? This is gravitational potential energy, students. Gravitational potential energy. Students, gravitational potential energy का formula क्या है? It's actually gravitational potential into mass. Students, ये है gravitational potential into mass of satellite या कोई object होगा वो, ये तुम्हारा formula होगा. Gravitational potential का formula students minus gm by r होता है. Negative sign shows it is bound to the Earth's surface. So now if I ask you students, what's the formula for gravitational potential energy? The formula for gravitational potential energy का formula क्या होगा? Minus g capital M small m upon small m. This answer is always in G. क्या ये clear हुआ students? ये किसका formula है? Gravitational potential energy of a satellite. I repeat students, when somebody asks you what is total energy of a satellite or total energy of a body, students, it's always kinetic energy and potential energy. Kinetic energy is K, potential energy is U. What is this? It's gravitational potential energy. What exactly it's? It's gravitational potential into mass of the satellite. What is gravitational potential? Minus gm by r we consider. Agreed? And this is minus gm by small r. That's your potential energy. Yeah, itna clear hua students? Friends, is this much clear to all of you all? Students, formula for Yes, sir. gravity Yes, sir. energy. What is kinetic energy? Students, what is kinetic energy? अगर किसी ने kinetic energy पूछा तो kinetic energy का formula क्या है? Simple. m orbital velocity the whole square. Satellite orbit में रहेगा ना. अगर ये motion होगा तो ही ना. ये तो rest है. इसको पूछना ना. ये अगर motion होगा तो ये होगा. Students, what is the formula for orbital velocity? What is the formula for orbital velocity? 100 gm by small r. So can I write down small m g capital M by small r? So can I say kinetic energy is g capital M small m by 2r? Is this answer also in Joule? क्या ये clear हुआ students? देखो तुम्हें kinetic energy का formula मिला, तुम्हें potential energy का formula. अगर किसी ने पूछा what is total energy? Students, what is total energy? तो क्या आंसर होगा? Sum of kinetic plus potential. चलो दोनों को ऐड करो. ऐड करो क्या आंसर आएगा? सर ये -1 ये +1/2. हेलो
ये देखो फॉर्मूला सेम है, GMM/R, GMM/2R। M क्या है? मास ऑफ अर्थ। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना? R is a distance. This is -1 plus R. What is -1 plus R? -R. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ? टोटल एनर्जी, and this total energy will be always in negative. स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? Yes. अभी हम बाइंडिंग एनर्जी करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इट गोज विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्टूडेंट्स, इफ आई टेक एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुना, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। Electron which is revolving around the nucleus of an atom of an element, students, even that is also binded to the nucleus. उसको हम क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है स्टूडेंट्स, अगर ये सैटेलाइट है स्टूडेंट्स और ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है स्टूडेंट्स, ओके, ये पहला केस, ये दूसरा केस। ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ओके, द मास ऑफ द सैटेलाइट इज स्मॉल m. Students, is this satellite is bound to the Earth's surface? Yes, it is bound to the Earth's surface. That's binding energy. Binding energy है क्या students? The answer is no students. Minimum amount of energy required. Minimum amount of energy required in order to free the satellite. In order to free the satellite, either at rest or in motion. Either at rest or in motion, where? To a point at infinity. Binding energy is the work done, to move a satellite or an object at rest or in orbit to a point at infinity, or work done in order to bring a satellite from infinity to a point in the orbit. Students, दोनों केस में मेरा आंसर सेम ही होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी है क्या? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट टू एस्केप। यानी एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी है क्या स्टूडेंट्स, मालूम है? इट्स द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट इंफिनिटी माइनस टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ईदर एट रेस्ट और इन द ऑर्बिट। सपोज अगर मैं ऑर्बिट के ऊपर जाता हूं तो मैं ऑर्बिट में लिखूंगा। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अभी ये बताओ, चलो, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट इंफिनिटी? कम ऑन, इंफिनिटी। तो कौन सा फॉर्मूला लोगे सर? फॉर्मूला तो ये होगा, एवरीबॉडी बी विद मी, ये फॉर्मूला होगा। इंफिनिटी का मतलब क्या है? आर को इनफाइनाइट ले लो, आर को इनफाइनाइट ले लो। स्टूडेंट्स, व्हाट इज 1 अपॉन इंफिनिटी? व्हाट इज 1 अपॉन इंफिनिटी? N into 0. मीनिंगलेस, जीरो। स्टूडेंट्स, ये जीरो आ जाएगा, माइनस ऑफ व्हाट इज टोटल एनर्जी इन द ऑर्बिट? So now see, what is the binding energy of a satellite in the orbit? The binding energy of revolving satellite. What's the answer? Plus G capital M small m by 2r. This answer will be G. Students, that is why many teachers जब भी ये concept सिखाते हैं ना, वो blindly students को बोल देते हैं। Students, जब भी binding energy आएगा ना, तो क्या करना students? सीधा मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी ले लेना, बस। अब देखो, टोटल एनर्जी का आंसर किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है, GMM/2R। बाइंडिंग एनर्जी का आंसर किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है, फॉर्मूला वही है। तो इज योर बाइंडिंग एनर्जी मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी? लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग बाइंडिंग एनर्जी है क्या स्टूडेंट्स? इट्स अ डिफरेंस। It's a difference of the total energy of the object at infinity to the total energy of the orbit in the orbit. What is the total energy of the object at infinity? Zero. Minus of minus. So that becomes your binding energy. So hope the energy part is clear for you. Students, I told you all, total energy is kinetic plus potential. Potential energy, gravitational potential energy is defined as the product of gravitational potential into mass of the satellite. What's the formula for gravitational potential, students? This is gravitational potential. Okay, and the formula for gravitational potential is minus Gm by r. Therefore, gravitational potential energy is minus Gm by small r. What's the formula for kinetic energy? Half m orbital velocity the whole square.
We know the formula for orbital velocity, so we got the formula for kinetic energy. Total energy and the addition of both of them. This is for revolving satellite. So total energy will be always in negative. Is it bound to the Earth? Yes. What is the binding energy? Binding energy is modulus of total energy. Answer in positive. अगर किसी ने पूछा define करो तो binding energy है क्या? Minimum amount of energy required in order to move the satellite from orbit to a point at infinity. And it is actually the difference of the total energy at infinity minus total energy in the orbit. Total energy at infinity is always zero. Why? Why zero? Because 1 upon infinity will be zero. Total energy in the orbit is minus gm by minus it minus plus. क्या ये clear हुआ students? Yes, students. So is it clear? Now the answer is no, students. The answer is no, students. Is this satellite at rest? Hi Anna. Just 2 minutes. Your chapter will be over, students. Just answer. Yes, करो. sir. ये रेस्ट पे है तो मुझे बताओ इसको काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी या दोनों होगी या सिर्फ एक? जल्दी से, रेस्ट पे है. सर ये मोशन में है ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, Potential. सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी. व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? कितनी बोथ कैसे होगा? काइनेटिक एनर्जी है नहीं, मोशन भी नहीं है. Sir, but the Earth is rotating, right? My dear, the angular velocity is my formula in terms of omega. This is the linear velocity. Hello, the satellite is going with the tangential velocity. Hello, we go for linear velocity. ये जो v है वो linear velocity, tangent है. Agreed? Yes, sir. तो यहाँ पे कौन सी होगी? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? फॉर्मूला क्या होगा? gmm by r, कैपिटल आर आएगा. एग्रीड? एग्रीड? Yes, sir. अगर ये सैटेलाइट को मुझे इन्फिनिटी में भेजना है, सपोज इफ आई आस्क यू हाउ मच इज द एस्केप वेलोसिटी रिक्वायर्ड? स्टूडेंट्स, द एस्केप वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट व्हिच इज एट रेस्ट in order to escape the earth's gravitational field, students, it's 11.2 kilometers per second. This much is the velocity required. Escape velocity for a satellite at rest को अगर मेरे को उड़ाना है तो it needs 11.2 kilometers per second. वही अगर रिवॉल्विंग है स्टूडेंट्स, अगर वो रिवॉल्विंग है तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी? सर टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. ये फॉर्मूला होगा. अभी देखो ध्यान से देखना, अगर सपोज मुझे इसको एस्केप करना है तो बाहर से मुझे एनर्जी देनी होगी. तो स्टूडेंट्स कैन आई से, ध्यान से देखना भी स्टूडेंट्स, एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ओके should be greater than binding energy in order to escape. है ना स्टूडेंट्स? अगर मुझे इसको एस्केप कराना है तो मेरी जो एनर्जी इंपार्ट करूंगा वो बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए. क्या ये सही है? ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इसको अगर मुझे इन्फिनिटी में भेजना है तो जो बाहर से एनर्जी दूंगा इट शुड बी ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी. व्हाट इज दिस? सर ये है एनर्जी टू एस्केप. व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर इट? सर हाफ mass of satellite into escape velocity the whole square. ये हुआ उसका kinetic energy. It should be greater than or equal. हम equal भी लेते हैं. Friends, can you tell me what is the binding energy for a revolving satellite? What is the binding energy for revolving satellite? G capital M small upon 2r, which is always in positive. क्या cancel हो रहा है? Can you tell me what is the escape velocity for a revolving satellite? This is the answer. A satellite which is revolving, students, a satellite which is revolving, अगर तुमने इसको इतनी velocity दी, the satellite will escape the Earth's gravitational field and will reach to a point at infinity. लेकिन अगर कोई रेस्ट पे है स्टूडेंट्स, उसको कितनी velocity चाहिए? 11.2 kilometers per second to reach a point at infinity. Is this clear to all of you? So when somebody asks you what is escape velocity, students, the minimum velocity required
minimum velocity required by a satellite to overcome the gravitational force of the Earth. To overcome the gravitational force of the Earth and to reach a point of infinity. अगर ये revolving है तो √gm/small r. अगर वो रेस्ट पे है तो उसको कितनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. अगर कोई सैटेलाइट रेस्ट पे है तो टोटल एनर्जी क्या होगी सिर्फ पोटेंशियल ही होगी. अगर वो रिवॉल्विंग है तो टोटल एनर्जी ये होगी नेगेटिव में. बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव में because it's modulus of total energy. How much is the energy required from outside? It should be greater than binding energy, but we went for equality. So what's the escape velocity for a revolving satellite? √gm/small r. What is small r? R plus h. Is this part clear to all of you? That's your concept of energy. Students got it? Yes, sir. Okay. See to it that now, after this, I want you to sit with it, go through your books also, as well as go through this particular sessions once again if you want, and derive the relations of these words. Try to simply go for your formula. एक orbital velocity का formula निकाल दो, time period का formula निकाल दो, फिर शांति से एकदम अपने go on to your instinct. अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल के रखो. वो अगर रिवॉल्व होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फिर टोटल एनर्जी उसका निकाल दो. फिर उसको बाइंडिंग एनर्जी में कैसे लिखते हैं वो बता दो. फिर उसको एस्केप वेलोसिटी में कैसे लेके आते हैं वो. ये रिवॉल्विंग के लिए. रेस्ट के लिए भी तुम अपने आप से लेके आ सकते हो स्टूडेंट्स. रेस्ट के लिए भी अपने रेस्ट में क्या होगा काइनेटिक तो होगा नहीं, सिर्फ पोटेंशियल होगा. ये जीएम में क्या होगा कैपिटल आर होगा. और इसको किससे इक्वेट करोगे हाफ एम वी स्क्वायर से. इसको इक्वेट करो. देखो तुम्हारा स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा. ये आएगा √gm/R 2gm/R और इसको तुम सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट्स 11.2 आएगा. See, these are the innovative ways which students think after the lectures. How do I get 11.2? You can get 11.2 easily. Agree, students? Is this clear? Kiti, are you Yes, clear with that? Pathway, are you clear? Yes, sir. Clear. Okay, fine. yes, sir. So sure that I want you all to go through it. Is that clear? Refer properly. Okay. We wind up the sessions over here only. Okay.